Welcome back to yet another episode of Health Unplugged, Our Superstars, where we take questions from individuals and answer them with leading healthcare professionals who deal with them on a daily basis. Today's topic affects almost every family, whether it's a parent, grandparent, sibling, relative, or even an individual who's in their 20s. It's about diabetes that we are hearing a lot nowadays compared to earlier. Also, we are surrounded by a lot of conflicting advice. Should we stop eating rice? Is sugar really the main culprit? Is diabetes actually reversible? Does the glucose monitor and smartwatches actually really help us? Are the weight loss injections the future? With so much of information available online, it is actually very difficult for us to decode what actually is the main culprit of diabetes. To help us separate facts from myths, we are joined by Dr. Ashok Kathuria, who is a medical director and general physician at Kathuria Hospital, Gurgaon. So today's conversation is about diabetes, why diabetes is spreading rapidly, and what are the main symptoms and how we are going to decode the treatment plan. So let's get started. What is diabetes? Actually, diabetes is the diabetes is the disease in which insulin production in this pancreas is low or even decrease. Right. Due to this, if insulin is not produced, then diabetes occur. Okay. And all these symptoms, just like this polyuria, means urine ka flow of urine is increased, and the polythirsty means प्यास ज़्यादा लगना. Right. Yeah, and even in the restless in the legs also, Okay. and in general weakness is there. These are the symptoms of this diabetes. Okay. Yeah. Looking at your experience as a specialist in diabetes treatment, sir, what are the main reasons in lifestyle changes that is actually affecting the diabetes? No doubt, this is the reason where nowadays people are not doing proper exercise. Lifestyle changes are there, no doubt. They are not doing the properly exercise and not eating the proper food also. Okay. Particularly, this type of food is junk food and all this cold drinks and all Right. this. And second thing is that they are not properly sleeping is Okay. also asleep is there due to this screening time is high. There are so many factors which are increasing the diabetes. Okay. We are seeing a lot of cases of diabetes in young generation compared to earlier days. What is the driving force that is making this shift? Due to this, the age factor is that nowadays young people are not aware about their health. Okay. Why? They are using cigarettes, they are using alcohol, and they are not ready for this health consciousness. Okay. Yes. Due to this, this is the fact. They are using this. I want to give an example. Mm-hmm. Few days back, one patient was there in my clinic. He was saying that मैं पूरी रात जागता हूँ, 2 बजे तक जो है ना, 3 बजे तक मैं अपना वो देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ और एक से एक क्लिप्स देखता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती. That's why I am using this white snack. Due to this, I think this is the wrong for this age. तो आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसका यूज कर रहा है कि वो दूसरे ड्रग्स का यूज कर रहा है. तो ड्रग्स का यूज करना, अल्कोहल का यूज करना, स्मोकिंग यूज करना, तो ये हमारे डायबिटीज के लिए और इंक्रीज कर. Right. So, doctor, in simple terms, can you explain our viewers what happens actually inside the body when they develop diabetes? और जैसे हम ये terms सुनते हैं, insulin resistance, HbA1c, blood sugar, so उनका connection क्या है? देखिए, इसका कनेक्शन तो ये है कि अगर हम देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने पहले बताया आपको कि डायबिटीज क्या है. डायबिटीज में इंक्रीज ऑफ द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. राइट. वो कैसे आया? पैंक्रियाज हमारा बॉडी का एक पार्ट है. वो हमारा एक हार्मोन्स दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन जो है वो रेसिस्ट करता है या उसका कम बनाता है.
वो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं जो Okay. हमारे इंसुलिन को कम बनाते हैं। Correct. तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट नहीं जाएगा जो ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन पूरा नहीं जा रहा, जिससे हमारी ब्लड लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। देन हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें इंसुलिन इंजेक्शन देने होते हैं या कुछ टेबलेट्स हैं जो पर्टिकुलरली या इंजेक्शंस हैं उससे हमें कंट्रोल लेना। Okay. जैसे मान लो मेटाफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन है, और देयर आर सो मेनी Correct. यस Drugs. मेडिसिन ड्रग्स विच में कंट्रोल दिस सीटाग्लिप्टिन है और आपका बीटाग्लिप्टिन, देयर आर सो मेनी मेडिसिन। शुगर खाने से मतलब मीठा खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ता, ये मिसकंसेप्शन मिथ है। Okay. मीठा खाने से कभी शुगर नहीं होता। अब इंसुलिन जो है हमारा वो पैंक्रियाज अगर नहीं बना रहा, दैट इज कॉल्ड द डायबिटिक कॉज ऑफ नॉट मीठा खाने से। ये दिस इज द मिसकंसेप्शन। So we also hear a term called as pre-diabetic. So ये इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल में बता सकते हैं, साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, जी, and how it can be controlled at an early stage. this pre-diabetes is the level in which this HbA1c is the level where it is less than 5.7, Okay. or if it is more than 5.7 to 6.5, in between, this is the pre-diabetes. Okay. If the sugar level is small high, then it's the pre-diabetes. Okay. And pre-diabetes will control after your exercise, your style, lifestyle. Okay. So basically जो borderline बोलते हैं वो भी pre-diabetes है. Yes, bottom line. अगर आपको बतानी है एक परफेक्ट रेसिपी या और एक कोई एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट जिससे डायबिटीज हो सकती है, तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में? देखिए, ऐसा कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है। ओके. हमारे बॉडी के अंदर जो हमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, वो सबसे बेटर ये है कि आप ऑर्गेनिक फूड लें। ओके. डेली एक्सरसाइज करें, ओकेजनली नहीं, डेली एक्सरसाइज होना चाहिए वो। और दूसरे नंबर पे हमें नींद, रेस्ट वो कम से कम 6 से 8 घंटे डेली लेनी है और प्रॉपर रेस्ट चाहिए। मेन ये आपको रेसिपी खाने पीने में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट द प्री डायबिटिक कंडीशन कैन बी स्टॉप और डायबिटीज को डेवलप करने से हम रोक सकते हैं? देखिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अगर हम 3 वाइट थिंग्स जस्ट लाइक मैदा, राइस एंड शुगर, these 3 things should be reduced, not controlled कि 100% कंट्रोल करना है, should be reduced. Okay. Yes. So sir, can you suggest any safe limits के in a day how much of rice an individual can eat और sugar को कितना limit करना है? Is there any limit for that? Yes. This is no doubt there is a limit. If you take this 1 katori of the chawal, Okay. is sufficient for a 1 day. And sugar only 1 teaspoonful. Okay. Fruit also you can take for control this diabetes. Okay. Yes. ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज वालों को कई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए. This is also a myth. Okay. This is also a myth. So sir, someone can actually look perfectly healthy, occasionally exercise भी करते हैं, but metabolically they are unhealthy. ये हो सकता है? Yes, no doubt. Indian peoples are generally low fat. Okay. And particularly in the body mass is low and fat in the abdomen. This is the belly fat. Correct. Belly fat is there, maximum belly fat is there. Due to this, the chances of the diabetes is so high because the mass is not there. Okay. Body mass is very less. And the fat in the body or fat in the abdomen is very high. Okay. So many people oftenly think कि अगर आप slim है तो आप डायबिटीज नहीं होगा आपको. Is that actually No. fact? This is also myth. If body is slim, but if your pancreas is not working properly, okay. Metabolically. Okay. Yes. मतलब जो लोग slim होते हैं उन्हें भी chances रहते हैं. So doctor, if food is one of the biggest area of confusion, so why do you think that people are leading with that? Actually, the food is not properly taking personally. Okay. Particularly the persons. Food, actually, little amount of food it's okay. The higher amount of the food which contains this
sugar level is high, Okay. then it is harmful. Otherwise, every food is good for the diabetes. Okay. Yeah. जैसे कोई जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो उनको भी डायबिटीज डेवलप हो सकता है या उसके वजह से No doubt, no doubt. Junk food is not good for this health. So what do you think about chips or palm oil related fatty food or sugary drinks? Are they all advisable? Not advisable. This is not good for the health. So आजकल we have heard that people eat brown sugar instead of normal sugar. Brown rice खाते हैं, jaggery खाते हैं. So what do you think about that? Is it really No. impacting? Jaggery and brown sugar, they are also producing the sugar, increasing the sugar level Okay. high. This is also mistake. जैसे बोलते हैं शुगर नहीं खाओ उसके बदले आप जैगरी ले लो या No, हनी no, ले no. लो रिप्लेस कर लो It also contains this sugar. तो हमें वो अवॉइड करना है कि Should be avoided. कंट्रोल फॉर्मेट में खाना नहीं चाहिए avoid. should people actually change or switch from the normal sugar to brown sugar or brown rice, jaggery, honey? Will that Yeah. help them metabolically? These better than the main sugar, but also reduce. It should be reduced. तो इससे उन्हें फायदा होगा कि नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा. We are hearing a lot about intermittent fasting हो गया या keto diet और doing diet on a regular basis. इन सब का क्या impact होता है? No doubt, this is a good effect of this intermittent fasting, keto diets are good for the diabetes. जैसे लोग हाई प्रोटीन डाइट पे स्विच कर देते हैं तो उससे किस तरह का इम्पैक्ट होता है? इज इट अ गुड वन इन विच मैनर? No doubt, this is a good one because the sugar level is decreased due to these things. तो इससे इंडिविजुअल की बॉडी में क्या अच्छा होगा अगर वो हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं या फिर कीटो डाइट ले रहे हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो किस तरह से उनको ये बेनिफिट करेगा? शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, डिक्रीजिंग में होगा. ओके. ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जा ही नहीं रही. राइट. तेरा कार्बोहाइड्रेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. प्रोटीन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं है उसमें. देन as we just heard that customized diet plans are really helpful in terms of treating the diabetes. So get in touch with our diet consultant on One Health Assist website and get a customized plan for yourself. देखिए इंटरनेट पे बहुत से ऐसे जो मिथ हैं, जैसे सपोज मेरा तो आयुर्वेदिक दवा से बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा तो देसी दवा से ठीक हो गया, 50 लोग लाइन में लगे होते हैं, मैं जाके गया और वहां से उन्होंने मुझे जो है ना मीठे में ही दवाई खिला के दे दिया, मैं ठीक हो गया. दिस इज नॉट द परमानेंट प्रॉपरली ठीक. इसमें पेशेंट कंफ्यूज होते हैं और कभी भी इस टाइप से डायबिटीज नहीं खत्म होती. डायबिटीज के लिए आपको प्रॉपर डेली डोज चाहिए, इधर इंसुलिन और इधर टेबलेट्स, और जो है ना आपको प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए, वेट रिड्यूसिंग चाहिए. ये मिथ है इंटरनेट पे कि आप लोग ये ले लिया वो ले लिया. बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ पर्संस वो अपना अपना दाग करते हैं कि मैं डायबिटीज को 10 दिन में ठीक कर दूंगा, 5 दिन में ठीक कर दूंगा. देयर आर लॉट ऑफ पर्संस व्हिच आर मिसगाइडिंग. तो जैसे होम रेमेडीज है, नेचुरल थेरेपीज है, वो सारे एक्चुअली इंटरनेट पे बहुत सारे होम रेमेडीज का देखिए. ऑर्गेनिक फूड, राइट. If you are taking the organic food, proper exercise, then it's the good remedy. Okay. There is no any other. No doubt there are some spices, there are some good things just like the warm water. This is good. So doctor, medicines like Ozempic, GLP-1 are becoming very famous and they are heard over the internet or social media very loudly. So ये सारे medicines actually affect करते हैं diabetes को treat करने में in a positive way? No doubt. This is the patent drug. Ozempic is a semaglutide. Right. This is a semaglutide, which are affected with no doubt. It is patented for this diabetes, not for the weight loss. Okay. No. But some colleagues are using for this molecule for the weight loss also. Okay. But the Ozempic is good for the diabetes and control the diabetes. How does that medicine work and why people are actually connecting Ozempic or GLPs with weight loss more than compared to the treatment for diabetes? This is no doubt, this molecule is control the diabetes as well as the weight loss. Okay.
but this is not registered for the weight loss. It is used, but not government planned. In terms, if you are taking this Ozempic, no doubt, just like कि appetite आपका slow हो जाए, हाँ, appetite low हो जाए, जिससे भूख नहीं भूख लगती नहीं है, लगेगी, lower down. इसीलिए उसे वेट लॉस से कनेक्ट करते हैं. Yes, बट yes, एक्चुअली इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. yes, yes. एक्चुअली वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होना चाहिए, बट वो यूज हो रहा है एज अ Weight वेट loss. लॉस मेडिसिन, जो एक्चुअली द साइड Side effect of this molecule. मेडिसिन. ओके. Yes, no doubt. Side effect. तो आजकल हम ये भी सुन रहे हैं कि ग्लूकोज मॉनिटर्स है, जैसे एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो लाइफस्टाइल इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, वो सारे यूज करते हैं ग्लूकोज मॉनिटर्स. तो उसका क्या इफेक्ट है और कितना यूजफुल है डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, if you are diabetic patient, then you can use only this molecule, Ozempic. Okay. Otherwise, I don't suggest you are taking this athletes or other. So let's move to the next segment of diabetes treatment and patients with diabetes. Usually they get frightened looking at the treatment plan for diabetes. So doctor, आप जब एक treatment plan देते हो patient को जिनका diabetes detect हुआ है, उनके लिए ये बड़ा it's like a frightening thing for them. तो कैसे आप उस चीज से deal करते हो patient के साथ? देखिए, when we prescribe the medicines of this diabetes, just like metformin, right, and other sitagliptin and aptagliptin, there are so many medicines which control the diabetes. We suggest the patient to continue regular medicines and continue the monitoring also daily. Okay. If your sugar level is high, then you inform to us and the dose of this molecule will be increased. तो जैसे किसी को नया डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज, वो पेशेंट के लिए वो ज्यादा डरा हुआ है, तो एज अ डॉक्टर आप उन्हें कैसे सजेस्ट करते हो टू calm down and start with the proper treatment? हाँ, देखिए, ऐसे में अगर सपोज कोई पेशेंट फर्स्ट डायग्नोज होता है, वो डरा हुआ है, राइट, देन हमें उसे कम डाउन करना है कि आपको दिस इज द लाइफस्टाइल डिजीज. ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेंजरस डिजीज है कि आपका कंट्रोल नहीं होगा. इफ यू आर टेकिंग द मेडिसिन प्रॉपरली, यू विल बी सेटल डाउन. ओके, ठीक हो जाएंगे. बट प्रॉब्लम इज दैट कि पेशेंट रेगुलर मेडिसिन रखें. वन टाइम आपको ये नहीं है कि आपने 4 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाना है. हो सकता है कि ये आपका रेगुलर लाइफ टाइम भी लेनी पड़े. तो व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स जो आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं जिससे उसे थोड़ा ईज मिले और वो एक्चुअली फोकस कर पाए अपनी डायबिटीज ट्रीटमेंट पे? देखिए, इसमें हम लोग क्या है कि एक तो अपना जो हमारा मेडिसिन पे तो कंट्रोल है ही. सेकेंडली हमारा पार्ट होता है डाइटिशियन. We have a dietitian in the hospital which particularly control how to control your diets. Okay. And which type of diet should be taken. Okay. ये हम लोग बताते हैं. Right. So उससे पेशेंट को काफी हेल्प मिलती है. काफी हेल्प. Okay. Sir, can you share a secret tip to control diabetes which our viewers can use? Secret tips of this diabetes is already I have mentioned that there are some points which should be followed. Right. Just like one, medicine regular, exercise regular, and fat-free diet. Carbohydrate should be less as compared to normal. जितना है खा लिया कोई बात नहीं. आज चिप्स 2 पैकेट खा लिया, चाय 4 भी पी ली तो कोई बात नहीं. This is the wrong habit. Correct. And alcohol should be reduced. और अगर बिल्कुल छूट जाए तो ज्यादा बेटर है. Right. Or should be reduced, or smoking should be controlled. Yeah. As we just heard that diabetes can be treated well with a modification in the lifestyle. You can get in touch with our wellness experts on One Health Assist website and cure your disease today. So doctor, many patients would be definitely asking you, diabetes is reversible or it is not reversible? No, there is no reversible of the diabetes because the beta cells which is produced in this pancreas is not working properly. Okay. Not controlled cells hormones. Means insulin is not producing properly. Okay. That's why not reversible. Once beta cells working properly, then it will be controlled. But
unfortunately, in Western countries also, there is no any permanent treatment or reversible. Okay. They are also taking these type of medicine. But social media पे there is a lot of trend which says कि diabetes is reversible और उसे reverse कर सकते हैं और patient completely diabetes free बन Only सकते हैं. only those persons which can control the diet Okay. and properly exercise and properly food habits can be not 100% sure, can be reversed. So basically, lifestyle modification is the Lifestyle key here. modification is the key of. Okay. So doctor, is there any kind of surgery which can actually help the patient reverse the diabetes or switching the pancreas to make it more healthier? ऐसा कुछ है? No, there is no surgery occurred in this country or even Western country also. Okay. There is no remedy, there is no testing, for this type of surgery is doing, because pancreas is an organ in which if we do the surgery, it will be damaged also. Hormones, means insulin is there. This is the natural hormone. Correct. Which may affect in any surgery. Then there is no question about this, if there is doing the surgery also. So वो option नहीं है. Option is not there. So doctor, can you explain us the different types of diabetes that are there and on which level or which state the reversal is possible? Diabetes is of two types. Okay. There is type 1 and type 2. Okay. Type 1 is the autoimmune disease, Okay. which is occur in this childhood. And type 2 is the disease when in the age of 20, 30s and above this age. Okay. Type 1 is not reversible. Type 2 is reversible. I have already told that if the modification of the lifestyle is. Okay. So doctor, there is one fact that surprises everyone, that because of diabetes, the other organs of the body gets affected. Like we hear a lot of cases of heart failure, kidney disease, or retinopathy, or even oral health gets affected. So why does that happen with a patient who is having diabetes? Yeah, this is a good question from your side. Uncontrolled diabetes affects the other parts of the body. Correct. Just like heart, kidney, eyes. Right. Why these are affecting? Because the sugar level is high. Okay. Not consuming blood. And if the sugar level is high, that's damage the kidney, retinopathy, neuropathy, and even heart disease also. Okay. It may affect in the kidney also. Okay. Yes. और ऐसे बताया जाता है कि ओरल हेल्थ ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, लाइक जैसे डायबिटीज के बारे में फर्स्ट डिटेक्शन एक डेंटिस्ट को ओरल हेल्थ से भी पता चलती है. No doubt. Oral health also affected this due to the diabetes. Okay. Let's move to the next segment where we are talking about prevention. अगर एक पर्सन है जिसे आज तक कभी डायबिटीज नहीं हुआ है, डिटेक्ट भी नहीं हुआ है, सो उसे अपने लाइफ में रिस्क फैक्टर कम करना है डायबिटीज को लेके, तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? Yes, this is a good question. देखिए, डायबिटीज नहीं है और उसके लिए आप चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो, तो सबसे पहला है कि आप रेगुलर 1 घंटा आप डेली एक्सरसाइज अपना फिजिकली एक्टिविटीज करें. ओके. और सेकेंडली हमें है कि वेट को इंक्रीज नहीं होने देना. वेट को है अपना BMI जो है उसको आपने बैलेंस मेंटेन करना. Third one is that we avoid this alcohol, right. Avoid this smoking also, and sugar means chini, maida, aloo, potato, and these things should be reduced. Yes. Can you share how you started this journey? Actually, I have started the hospital since 2001. Okay. As a general physician. Correct. And there are lot of challenges. Just like nearby there is rainy water, or nearby there is sewage problem. Okay. There is lot of problems out there. But nowadays it's settled. The
I have this charity also in this hospital. That's There really are a lot nice. of patients which have no any consultation fee. Okay. Then it's okay. I call to reception. It's okay. Come, भेज दो उनको आने दो. I will see the patient. So आप pro bono cases भी करते Yes, हैं? yes. Okay. वो भी करते हैं. अभी भी करते हैं. Till now. That's really nice. Till now. Yes. Kind of. देखिए, डॉक्टर हमारे फैमिली में एक बड़े ब्रदर थे हमारे. Okay. He was a doctor in this field सोना. तो उनका ये कहना था कि तेरे अंदर जो है ना वो कैपेसिटी है तो लोगों की सेवा कर सकता है. Okay. So you have a good point that you can serve the peoples. तो वो एक motivation था. Okay. Then I want to become a doctor. सर आप हमारे साथ एक पेशेंट स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिनसे आप आपकी ट्रीटमेंट से पेशेंट को काफी राहत मिली और पेशेंट हैप्पीली बाहर गया. हैप्पीली बाहर गया. हाँ, मैं एक्चुअली बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ से बिल्कुल कंट्रोल होके नॉर्मल होके गए हैं, शुगर लेवल के भी, अदर डिजीज के भी. बट मैं आपको एक ऐसी स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ जिसमें एक ओल्ड अराउंड 50 इयर्स ओल्ड पर्सन. Okay. वो उनका जो है एक तो सबसे बड़ा था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, using the alcohol, Okay. using this smoking also. But after counseling, मेडिसिन अच्छे से उनको स्टार्ट किया, काउंसलिंग किया, वो अपना होप ऐसा लेके चला था कि मैं तो मरूंगा. अच्छा. मैं तो डायबिटीज हो गया, अब तो मैं मरूंगा, मुझे जो है ना जीना नहीं. बट आफ्टर सम टाइम काउंसलिंग, कंटिन्यू काउंसलिंग और मेडिसिन प्रॉपरली लिया और इवन जो है ना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मोटिवेशन दिया. Correct. देन ही इज नाउ ओके, हेल्दी एंड कमिंग particularly for this visit also, following also. How you can set a link between kidney failure or dialysis and diabetes? No doubt, this is the good question from your side. If the sugar is not controlled, uncontrolled sugar may lead to the kidney failure. Okay. There are a lot of cases in which the creatinine level is so high, the urine pressure is very low, then the kidney is failure and doctor suggests that this dialysis should be done. Okay. Then there are 3 or 4 in a week's dialysis. Sessions. As an experienced doctor, how does platform like One Health Assist help you in a daily routine, and how does it provide assistance in your patient management? No doubt, this platform is good, but initially when 2 persons are here for this One Assist, I don't believe this is the good chapter of this to help this. This is the good platform for this. Right. Because there are a lot of persons which are here or there are coming and saying this is the point, this should be done, this should be done. So one person, Mr. Rohit, I think so, was there. Okay. From their OH, I think. He was previously came to me and that called me, you believe us, Okay. or this will be not doing anything. Then I believe after 2 months, 3 months, then बड़ा मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि आई थिंक तो किसी बाइक मोटरसाइकिल में उसका नहीं. OHA I introduced around 3 months back. Okay. And explain the work, how it's done. तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जिसमें हम लोगों का जो वन टाइम मीन्स आपका केमिस्ट का मेडिसिन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स हो गया और इवन न्यूट्रिशन हो गया, प्लस आपका डाइट हो गया, डाइट प्लान हो गया. तो दिस इज द वन टाइम एंड एक पॉकेट में आप मोबाइल में ये सारी चीजें ले सकते. So finally, this brings us to the end of the podcast. Thank you, doctor, for throwing light on the diabetes treatment and the diagnosis part. We are very happy to share this podcast with you. Please like, share, and subscribe, and stay tuned. Thank you for coming. Thank you for coming.